बाकी सीजन में कंपेयर करें तो अभी आपको कंसिस्टेंटली टस्क तो वो पहले अंदर बाहर करना और फिर अभी स्टेबिलिटी करना आपके गोल में, वो कितना इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि रेडी है पहले से यहाँ खेल खेल रहा है, तो प्रिपरेशन भी वैसा सारा चीज वैसे ही रह रहा है कि हाँ खेल में क्या क्या जरूरत है वो सब चीज क्या हो तो अच्छा एक की अभी तक की परफॉर्मेंस सर नाम पब्लिकेशन और फिर क्वेश्चन आई एम रियली फ्रॉम इंडिया रेडियो आकाशवाणी अभी तक की जो परफॉर्मेंस भी बनी है वो जनक नहीं रही है इसके पीछे क्या हम था भी जैसा भी है। अभी देखो जो भी कुछ करना चाह रहे हो वो ऐसा अप टू द मार्क हो नहीं पा रहा, तो मैच रिजल्ट के पीछे देखोगे तो फिर रिजल्ट का अप एंड डाउन होते रहता है। तो अभी हम लोग का ज्यादा डाउन चल रहा है, तो कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग कि कब ना जीतते जाए अभी यहाँ से मैच ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। साहिल फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टार अभी आपका दिनों का ब्रेक रहा था मैच मैच उस बीच में टीम वाइज और आपके कैसे इज देयर एनी शिफ्ट कि आपने अपनी इंटरेस्टिंग करके नहीं अपनी आपकी चेंज आपका टीम में होगा देख पर आता है वो तो कैप्टन सब कोच ज्यादा अच्छा बता सकते हैं आपको, और इतना ज्यादा ये सब चीज हम लोग करते नहीं है। बस यही है कि मेरा जो काम है वो काम में अपना 100% दे पाए टीम के लिए, वही से ज्यादा कोशिश करें। आई वुड अनुकूल, मैं शरदीप, हिंदुस्तान टाइम्स से। पिछली जो आपने मैच खेला वो जीते, इससे कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये टीम के लिए? बहुत कॉन्फिडेंस होगा फर्स्ट विन तक टीम के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। सारा बहुत कॉन्फिडेंस में आए और बहुत इंजॉय किए। लास्ट 3 4 डेज हम लोग का जो चल रहा था ऑलवेज पूरे जॉब था और प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब कॉन्फिडेंस में है। होप सो अभी ऐसे ही हम लोग जीतते रहे। महबूब वाली वाली बात करते हैं भी एलएलसी यहाँ पे अपनी टीम भी हार चुकी है आप लोग यहाँ पे आए हैं क्या लगना है कि एकदम में आप लोग यहाँ से वापस लौट पाएंगे देखिए अब हार जीत तो लगी रहती है, बट कोशिश करेंगे कि अब अच्छा तो हम अपनी टीम पूरा बेस्ट दे पाए मैच के लिए, और कोशिश करेंगे कि जीते हम लोग। और जैसा अभी जैसे टीम का कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है और अच्छा खेलते आ रहे हैं सब। बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं तो बैटिंग भी शुरू कर दी है अच्छा करना, तो होप जीतेंगे। फसल फ्रॉम टाइप्स ऑफ इंडिया वकीलाना एक क्या अपडेट है क्या इस मैच में हमें बताना आपसे ज्यादा प्लेइंग में प्रैक्टिस तो हम लोग के साथ में अभी कर रहे हैं, विकेट टॉस में पता चल जाएगा नहीं। लास्ट साइड पोस्टर आप जैसे डोमेस्टिक में भी बहुत खेल रहे हैं आप तो एज ए डोमेस्टिक प्लेयर जो आप आईपीएल के वेन्यूज पे डाल रहे हैं आपका कितना इनपुट है और स्पेशली फॉर स्पेन और डोमेस्टिक जापान साइड मैं देखिए जो भी अपना करते आ रहे डोमेस्टिक में वही सोच रहे हैं हम लोग कि इधर जाए वही सेम नहीं करें। और इधर क्या है कि बस माइंड सेटअप जितना अच्छा रखोगे उतना ज्यादा क्लियर रहोगे अपने परफॉर्मेंस से, अपने सारा चीज जो भी करते आ रहे हो अभी तक। तो यही कोशिश करता है जितना क्लब में आपको ग्राउंड में भी बाहर में भी, और जितना जो भी टीम का नीड है उस चीज में आप जाके अपना 100% दे पाए। बस ये सोचते रहते ज्यादा इधर सोच नहीं पाते जो लग रहा है, तो ज्यादा क्लियर रहते हैं वहाँ। थैंक यू। थैंक यू I think to apply on the game. So I mean, obviously, there's lots of preparation and planning, conversation going on, and there's only so much you can do in terms of that because who knows the following day, all the meetings, or even the day of the game, what the conditions are going to be like. So there's always a caveat to planning and preparation. The game is always the most important what happens in that scenario. So adapting is key. Look, I think everyone at the moment knows that probably our batting is a little bit short where it needs to be, and no more than the players themselves. But I can assure there's every kind of conversations and guys working hard in the net to overcome that. We feel we are one match away from smashing where we need to be, and the batters are quality players, each one of them. So we feel we're that close away from finding that performance and getting down season when it's just multiple changes occur opening population, moving for the new you plan to bring some stability to the opening day. Well, I think in terms of one of those changes was very much a matchup. So, in the modern world, you try and recognise what you're going to do and plan accordingly. Of course, when you're not playing quite so well, you're trying to find that perfect matchup or where it belongs. And also at the same time, stability is vitally important. So I think it's a case of still trying to find the best combination for us in terms of when you find that combination, you try to stay as long as possible.
Yeah. Further? Anybody? Sir? There is a change in the pitch today for the tomorrow's match. So is there any certain policy behind that? So it's black soil. Yeah. Yeah. Look, do you know what? From a foreign perspective, an overseas coach, sometimes it can make a bit too much before the game about the condition, whether it's red soil or black soil or mixed. My personal view in it, to the earlier question, is that you play the game in front of you. You might keep going with a preconceived idea of how a certain pitch is going to play. You limit your planning to a certain way. So I think whenever pitch you play on, you must adapt to the condition, maybe some seam a bit more, maybe some spin a bit more, maybe some more for batting. You play what's in front of you. And I think regards to the conditioning, sometimes we talk too much about what my sort is, just play to the conditions and play. Yeah, because Four consecutive defeats and spinner has scored 9+ over in this three. Four consecutive defeats, and the spinners have gone plus 9+ per over in 3 of those. What is going wrong with the spin group right now? Something going wrong. If you look at those games played on, there was that Punjab game, 240, 220 to pass score there. So actually going to 10 overs on below. Well, placing the conditions and what's in front of you. Maybe sometimes if the team needs 12, 13 and over, going 10 and over is absolutely appropriate. But I'd rather talk about the 50 English is when really well. And last game went to 6, just over 6 and over. Sid also bowled very well, taking away. So as a spinner, you're always going to have sometimes it doesn't go your way. But actually, both of those bowled really well on 2 or 3 occasions, and that's where our focus has been. anyone? No. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.